Assalamu alaikum, everybody. This is Sarmad Amer, and this week we are with another guest talking about the digital media industry. Specifically, we're talking about how to make it in digital media. And today we have Sheikh Harris Javaid from Talking Point. Harris, can you introduce yourself and tell us a little bit about what do you do at Talking Point? So first of all, thank you, Sarmad and MangoBaaz, for having me here on this live session. I myself, Sheikh Harris Javaid, I work for this PR firm based in Karachi, Talking Point. I've been with them for more than 2 years now, and we have been working on very diverse and different projects from all the industries, from corporate to lifestyle to food and FMCG and all of that. So particularly, just space में I'm working, that is media relations space. I work there as a senior manager for media relations. So हम लोग interaction mainly जो होता है वो media के जितने भी outlets हैं, be it conventional or contemporary, आपका print, electronic, digital, international artists and all of that. So that's what my core job there is. Beside that, we work on strategies, ideas, and all of that. Right. And you mentioned कि आप हर किस्म के media platforms के साथ deal कर रहे होते हैं. Can you, before we dive into a little bit about digital media specifically, can you tell me how different is the skill set needed to interact with or needed to communicate with people from traditional media like TV and print versus websites and digital platforms and influencers and all that? So, Sarmad, I believe there are always, different target audience for every medium. So when we talk about contemporary, so contemporary can there be, we have different target audience. So let's suppose X newspaper is targeting a niche and the X newspaper is targeting the masses. So we need to understand whoever is sitting behind that desk. Let's suppose if we talk about high-end newspaper, so we would understand what kind of a publisher is there, what kind of an editor is there, what kind of sub editor is there or reporter is there. So we have to come to his level and understand his psyche to talk to him. That's what our core job when we talk about media relations. And let's suppose if we are talking someone who is targeting rural areas, or let's say who is targeting SEC lower level of the newspaper की जो आपकी category है, so we would understand कि वो किस तरह का बंदा है, वो क्या target कर रहा है, what exactly his mindset is, what actually the news story would that, for example, if I say high-end newspaper, Dawn, Tribune, the News, Business Recorder, उनके लिए there will be a different story. I cannot pitch the same story for the masses when I cannot pitch the same story for the higher newspaper as well. So we need to understand the psyche of those people sitting in those publications, first of all, to understand how to talk to them, how to reason with them, how to sell them, because our core job is to basically get mileage out of that. We want to get maximum space, maximum word for our clients from those publications, and at the same time we want to please them also. So we need to understand what would benefit them and what would benefit client. That's the only way it is going to work. Right. And how is it different than dealing with, say, digital publications, Okay, like so a website or an so Instagram page? So honestly telling, when I talk about digital publications, particularly in which we target websites. So it is the same way. We need to understand what are they targeting. So Urdu Point and MangoBaaz particularly, and then there are Mashable, and then there are Mesh, and number of websites. Their target audiences are different, and when you talk to them, you will understand they're exactly the same manner. They're acting in the same manner as any other contemporary conventional print medium is doing. But when we talk about digital media in a larger horizon, we talk about Instagram influencers, we talk about bloggers. Those are different people, so they actually vary from person to person. Those are very individualistic approach. You cannot be like, "Okay, if I'm talking in a particular way, if I'm reasoning in a particular way to one influencer, I cannot expect the other influencers to be acting the same way." So you have to understand all those influencers, which is a huge influencer base we have, and we closely work with them. We need to understand what works with them, what works with their aesthetics, what works for their account. So once you know what works for them, you can always be able to speak to them properly. You can always be there to crack a deal. You will always be help them to build them and help a brand to build. So it is a mutual understanding. Once you understand
mutually what exactly their aesthetics are. Right. Right. So we are increasingly finding like news articles वगैरह आते हैं या reports आती हैं by analysts वगैरह कि digital media is becoming more important as compared to the traditional newspapers and traditional TVs. Ad spend companies का जा रहा है digital की तरफ, especially during this pandemic and all. Um, in Pakistan, according to your experience, has COVID affected the importance of digital media? So it increased the importance of digital media. Okay, so first of all, I would want to answer the first question. Yes, the mediums, which includes print and radio, a lot of places it was mentioned that they are the dying mediums. But Right. as my education is in still same degree, my discipline was mass media and media sciences and all of that. I believe and understand the importance of print and radio will be there forever. They will be there to document everything, although digital is there, but there are still readers who want to have a physical paper in hand to read the news in the morning. So uski importance will still be there, but you can say they were suffering due to a lot of things. Digital is very active, everyone want to put spends there, but at the same time you can see a lot of print ads are still there, radio pay ads were still there. But in the COVID period, you can say it was a push to get them off the grid, and they went very back. Now everything went on digital due to the printing issues. Editions were not printing properly, आपका magazines are not printing properly right now, the staff couldn't go to the office to check the papers. So the hindrances actually उसकी वजह से ओवरऑल जो आपका हुआ है वो पुशबैक हुआ है. एंड ऑब्वियसली डिजिटल स्पेस पे हमने देखा कि ग्रोथ हमारे गैलप और डिफरेंट डिफरेंट जहाँ से भी रिसर्चेज आती हैं, वी हैव सीन के वहाँ पे नंबर्स इंक्रीज हुए हैं. उसका बहुत सारे रीजंस हैं. उसका सिर्फ ये रीजन नहीं है कि पेंडेमिक आया और लोगों ने ऑटोमेटिकली डिजिटल पे शिफ्ट कर लिया. नो, स्कूल्स बंद हुए, all the kids went home. एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज बंद हुई, पीपल स्टार्टेड सर्फिंग ऑल ओवर द इंटरनेट. सो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एकदम बूस्ट हुआ है डिजिटल मजीद. ऑल्दो द शेयर वाज हाई आपका बिफोर पेंडेमिक एज वेल, बट आफ्टर पेंडेमिक आप समझें कि ओवरऑल मार्केट को टेक ओवर कर लिया उसने, डिजिटल मीडिया ने. सो नाउ यू आर स्पेंडिंग you're basically locked in your house. So ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कहाँ करेंगे? You're spending on social media, you're spending on digital media. Even if you are playing games on your phone, you're seeing the ads. So that is again digital media. If you're watching movies or YouTube, you're still finding those ads, you're still finding those campaigns there. So that is digital media as well. You did not have the avenues to step out. So that's how digital media actually got boom. And in Pakistan, definitely, when we talk about advertisers, brands, and marketeers, including the public relation people, we figured that out. We cracked that in time that this is where we have to go. This is how we have to communicate our people. Our campaigns turned from conventional to contemporary media just because of that. Because obviously, जहाँ पे आवाम है वहाँ campaign है. वहाँ पे market करेंगे अपनी product. आपका ultimate goal आपने eventually you want to sell it. Either sell it, either you put the information out, whatever your ultimate goal is. जहाँ पे ऑडियंस इंटरैक्ट करेगी सिर्फ वहां पे आप कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ digital media is actually getting a lot of importance right now. Right. Do you think कि ये जो boom आया है, as you mentioned, कि different factors surrounding the pandemic है, and not just the fact कि लोगों ने easy switch समझा कि जी अब घर बैठ के हैं तो let's switch over to digital. Do you think Yeah. that the boom for digital media is going to stay after this whole pandemic situation is over, या फिर everything will be back to normal, so to speak, कि print की और रेडियो की वापस बढ़ेगा मार्केट शेयर फॉर एड स्पेंड एंड ऑल? Yeah, देखो सबसे बड़ा मसला तो ये है, we need to find out when this is leaving us, which is not anytime soon. तो जब तक हम लेट्स से अगर आप बात करते हो कि किसी प्रिंट पब्लिकेशन के सर्वाइवल की अगर हम सबसे पहले तो बात करते हैं, तो लेट्स सपोज अगर प्रिंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा इन द होल पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस व्हिच इज देयर राइट नाउ, अगर वो उस चीज को ओवर द पीरियड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो उसका वापस से रिलाइव होना इज लाइक अ बिगेस्ट टास्क आई कैन से. बिसाइड दैट, जब हम बात करते हैं कि ये स्टे करेगा या नहीं करेगा, देखो डिजिटल हमने अडेप्ट जो है ना वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया से, पूरी जो आपका इंटरनेशनल
वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, हमने स्टिल 10 साल बाद जाके उसको अडेप्ट किया है, और वी आर स्टिल रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अच्छा वो डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, या चीजें डिफरेंट होनी चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। आज भी अगर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ ना, आई वाज रीडिंग समवेयर के पब्लिक रिलेशन और कैंपेन्स के अंदर देयर इज न्यू थिंग कि जूम जब आया तो जूम बैकग्राउंड जो है वो आपका इंडोर्समेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सो अगर मैं आज पाकिस्तान के किसी क्लाइंट में किसी भी मतलब क्लोथिंग ब्रांड, एफएमसीजी, फूड, कॉर्पोरेट, किसी को भी जाके अगर मैं बोल दूं ना कि यार लेट्स जस्ट डू दिस ना, हम जूम पे एक इवेंट कर लेते हैं, जूम का बैकग्राउंड जो है ना वो एंडोर्समेंट हो जाएगी, दे वुडंट अंडरस्टैंड। सो प्रॉब्लम ये था कि हमने एक्सेप्ट ही इतना लेट किया है। तो जब हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है, फोर्सफुल एक्सेप्शन मैं इसको कहूंगा कि हाँ फोर्सफुल हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो दिस विल स्टे। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव रेडियो वापस से आएगा, रेडियो कैन नॉट डाई। आपका अगर मैं बात करूं, अगर मुझे आज भी किसी कैंपेन के अंदर ये सोचना होता है ना कि यार मुझे नेशन वाइड करना है, और मुझे क्या कहते हैं आपका अर्बन और रूरल दोनों को रखना है, रेडियो इज माय मीडियम। I don't believe people to be sitting in Thar and using Instagram. I don't believe people to be sitting in somewhere in the rural area and using Facebook for me. So radio is the right form of communication for me to go to in those area to inform them about particular issue in their native language. So radio तो कहीं नहीं जाता. Same goes for आपका print. हाँ, इनका share, market share will be still very low. और उसके ऊपर वी कैन से कि वी कैन ओनली होप कि उनको वापस से डेवलपमेंट मिले, आपका वापस से दे कैन ग्रो बैक, दे कैन बाउंस बैक, दे वुड डाई, दे विल स्टे। आई कैन नॉट कॉमेंट कि हाँ वो उनका मार्केट शेयर ग्रो करेगा, बट आई वन थिंग आई बिलीव digital will stay and sustain just the way they are right now. If they have taken 90% of the market, 90% of the market will stay, and there are chances को इसको मजीद disruption आए, इसके अंदर मजीद इसको इवॉल्व करें, कोई नए आइडियाज आए, बिकॉज यू नो नाउ इफ यू सी हमने हमने जितने भी टाइम स्पेंड किया आपका पिछले, जब से डिजिटल हमारे पास इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, वी स्टिल हैव इशू विद द ऑनलाइन पेमेंट्स। हम डिजिटल पे तो आ गए हैं, हमने कैंपेन्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, हम आपका स्टिल we are the people who want to give in hand cash to the people delivering any product to us. तो वो उसके इतने सोल्यूशन पूरी दुनिया में चल रहे हैं, पेयोनियर चल रहा है, सादा पे चल रहा है, a lot of you know आपका पेपैल चल रहा है, आपके इतने सारे पेमेंट सोल्यूशन है फिनटेक के जो कि हमारे यहाँ पे जिसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती, बिकॉज यू नो यू एंड आई आर नॉट सेटिस्फाइड गिविंग माई मनी ऑनलाइन। हमारे यहाँ पे इस तरह के इश्यूज हैं, हमारा जो डेमोग्राफिक है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे इश्यूज बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। वी डोंट थिंक कि यार अच्छा आपका डिजिटल पे अगर कोई मुझसे कह रहा है कि यार आप मुझे 5,000 की पेमेंट कर दे, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा, या आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज ही आती है यार ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा यार, शिट यार ऐसे ना हो मेरे पैसे आगे पीछे हो जाए। और उससे पहले बढ़ के सबसे बड़ा मसला, यार क्या ये वेंडर एक्चुअली डिलीवर करेगा भी ये चीज या नहीं करेगा, और ये जो पिक्चर इसने लगाई हुई है ये एक्चुअली है भी या नहीं है। सो यू नो when we talk about digital space, we are still not sure about it, but we are endorsing. We are not sure कि अच्छा यार if being a consumer I will respond positive to that, but as a marketer, as a brand, I this is the only avenue I can go with because my audience is there. So we are still confused. Okay, let's suppose अगर मैं यहाँ endorse करूँगा, is this the right way? Because you know once this pandemic is over, we still want to go on ground. हमारा जो हार्डकोर बिलीव है ना वो ये है कि लॉन्च ऑन ग्राउंड होना चाहिए, हमारा हार्डकोर बिलीव ये है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, हमारा क्या कहते हैं इवेंट ऑन ग्राउंड होना चाहिए, हमारी एंटरटेनमेंट की कोई भी चीज ऑन ग्राउंड हो सकती है, मतलब हमारा बिलीव ये है। बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हेन डेविड गोएटा एक्चुअली डिड अ डीजे शो ऑन द टॉप ऑफ हिज बिल्डिंग एंड दैट वेंट ऑनलाइन, देयर वाज नो ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ हिम। सो मतलब हमारे अंदर वो मेंटेलिटी आने में अभी टाइम है। So हम accept कर लेंगे, digital will stay because we still have to learn and accept a lot. So I believe it will. Right. और आपने जब बात की कि disruption आनी है और change होना, tell me a little bit about how this change is translated to brands that you are specifically working with. For example, as I know, okay, one of your brands is Lifebuoy. Yeah. Maybe using their example or any other brand that you might be working with, how has advertising or communication with their audience changed because of the pandemic? Okay, so I'm going to talk about two of my brands. So first of all हम बात करते हैं let's say Lifebuoy की। Lifebuoy का main core purpose है साबुन बेचना।
उनके पास एक साबुन है, उनको वो साबुन बेचना है, वो इस साबुन को सालों से बेचते आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और उनकी आप अगर आप कम्युनिकेशन देखें तो वो टिक 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 जम्स मर गए, साबुन खरीद रहे हैं। जैसे लाइक आप किसी भी साबुन के अगर ब्रांड को उठा लें, ये उनकी कम्युनिकेशन है, दैट्स हाउ दे सेल एंड दे हैव बीन सेलिंग सक्सेसफुली इन द मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। But when we talk about COVID based, basically, जब आपका COVID आया and everyone just got confused कि what exactly do we have to do, how do we have to sell, this is an FMCG product, putting this is something which is available on the rack, and how do we have to sell, people are not stepping out, corona is everywhere, so people are scared. And being a healthcare product, या let's say आप कह रहे हैं कि soap, which was essential part in this whole period, they had a duty on their hand to inform people, to educate masses कि इसका इस्तेमाल कितना जरूरी है इस ओवरऑल पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर। सो अब मैं बात करता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कैंपेन होती है वो होती है एंटरटेनमेंट बेस्ड। आपकी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए। आप आ, किसी भी चाय के ब्रांड को उठा के देख लें, वो भी नाच गाने से बेचते हैं। और आप देसी किसी दवाई को भी उठा के देख लें, और देसी घी को उठा के देख लें, और जूते को इवन उठा के देख लें, वो गाने गा के और डांस करके ही बेचते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे वो चीज अडाप्ट की जाती है, हम उसको इजीली देख लेते हैं, हमें वो गाना भी याद आ जाता है, वो डांस भी पसंद आ जाता है, हम चीज भी जाके प्रॉब्लम खरीद लेते हैं। सो इन दिस सिचुएशन दिस वुडंट वर्क। कोरोना के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। Internet became a very hostile space in terms in period of corona. We did not know how people would respond. Instantly अगर आप कोई बात करते हैं और यहाँ पे किसी के बीमार हुआ हुआ है और कोई किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी के साथ ये मसला हुआ हुआ है, किसी को सना मक्खी काम नहीं आ रही है और किसी को कुछ हुआ हुआ है, सो उस पीरियड के अंदर, पूरे पीरियड के अंदर यू कैन नॉट से कि अच्छा यार आप एक काम करें, आप डांस करें एंड यू विल बी ऑल फाइन, आप मतलब ये करें यू विल बी ऑल फाइन। सो उस वक्त पर्पस बेस्ड कैंपेन करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव लाइफ बॉय डिड अ रियली गुड पार्ट वेयर दे एक्चुअली टोल्ड पीपल हाउ टू वॉश योर हैंड्स। एंड वॉश योर हैंड्स इज लाइक अ वेरी स्मॉल, मेरे ख्याल पूरी दुनिया के अंदर एक वो चल रहा था कि वॉश योर हैंड्स, सही है, ये स्टेप्स है। वी डिड एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, दिस वाज द कोर पर्पस टू एजुकेट एवरीवन कि यार लाइफ बॉय एक मैसेज का ब्रांड है, पूरे मैसेज को पता होना चाहिए कि यार लेट्स से 5 स्टेप होते हैं, 20 सेकंड होते हैं, हाथ धोना लाजमी है। बट वी, ये तो एक सब मैसेज है जो हमने प्रोवाइड कर दिया। बट बीइंग आपका क्या कहते हैं अ ब्रांड विच हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैड टू पुट इन सम एंटरटेनमेंट एज वेल, वो एलिमेंट डालना जरूरी है, बिकॉज हमारी ऑडियंस अंडरस्टैंड ही तभी करेगी। वी मेड दैट अ सिनेरियो बेस्ड स्टोरी। Let's suppose we pick influencers, we ask him to produce a video in which you're actually explaining a whole scenario and how to utilize that soap and when to utilize that soap. Let's suppose आप ग्रोसरी लेके घर के अंदर आए हैं, तो आपको क्या कहते हैं हाथ धोने हैं 20 सेकंड। लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स जो हैं वो बाहर से कोई चीज लेके अंदर आए हैं, ऑफिस से आपके आए हैं पेरेंट्स, यू हैव टू टेल योर पेरेंट के अब्बा अब्बा मतलब गो टू द वॉशरूम एंड यूज whatever the soap is, use it for 20 seconds. All these campaigns, all these small आपका जो situations थी, that explained when is it important, how to do is it आपका important, and what exactly is this doing is the thing people would understand and know कि अच्छा ये कितना जरूरी है। So एक तो ये campaign इन्होंने की आपका लाइफ बॉय ने, then लाइफ बॉय did an amazing campaign where they actually told साबुन इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। लाइफ yeah बॉय साबुन हो या डिटॉल हो या लेट्स सपोज एक्स, दिस इज द टाइम व्हेन पेंडेमिक हिट अस सो हार्ड एंड दिस वाज द इनिशियल स्टेज। वी स्टार्टेड विद दिस कॉन्वर्सेशन कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ो इस वक्त। द फाइट इज नॉट अबाउट द ब्रांड्स, द फाइट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे यूनाइट एंड टेल एवरीवन टू बी सेफ। एंड उसके बाद आपका नेक्स्ट कैंपेन ये आई, सिचुएशन बेस्ड आई, एंड यू स्टार्टेड टू इन्फॉर्म, एंड देन अभी रिसेंटली if I'm not mistaken last week we did a campaign about hand sanitizer with Lifebuoy. It is exactly the same. And again यहाँ पे मैं चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा, इन पाकिस्तान हमने आपका टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमने यहाँ पे मेरा ख्याल 2% 5% ब्रांड्स को देखा होगा जिन्होंने ऑगमेंटेड रियलिटी यूटिलाइज की है। लाइफ बॉय केम विद आपका आपका international filter, and we converted that filter into Pakistani version of hand sanitizer. So whenever you are, let's suppose, put a hand in front with that filter, तो bottle होती है, bottle ऐसे करके turn होती है, आपके हाथ में hand sanitizer फेंकती है, and then you just rub your hand and you're actually, and उसको ऊपर रख के we build a story.
Okay, let's suppose if you are going to gym, you're putting hand on your equipment, use that filter and tell everyone hand sanitizer is important. So this is the kind of things we did. सबसे पहले आपने जब brandless campaign की, that is information you are giving out. Then you started with situation and entertainment, that is basically infotainment. So आपको टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ा, that is what आपका लाइफ बॉय डिड. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, ये तो आपका देखें प्रोडक्ट बेस्ड हो गई, एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो गया आपका, इस तरह करके आपका रिटेल का. ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सर्विस बेस्ड क्लाइंट्स भी हैं, तो हमें उनको भी बड़ा देखना पड़ रहा था. लेट्स सपोज आपका फूड पैंडा, मेरा क्या कहते हैं रेगुलर, वी वर्क रेगुलरली विद फूड पैंडा ऑन मल्टीपल कैंपेन्स, एंड दिस वाज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट and the most toughest time for food panda to provide service on the streets. They have a fleet of, let's say, 40,000 people working for them. They're out there on the streets. सर्विस देना भी लाजमी है, सर्विस लेने वाले भी अग्री कर रहे हैं कि सर्विस लेना लाजमी है, बट एट द सेम टाइम उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी पे बात करना बहुत जरूरी है. उनके आपका क्या कहते हैं कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी निकालना बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पे बात करना जरूरी है. अब आई कैन नॉट जस्ट पुट अ प्रिंट एड ऑन इन द न्यूज़पेपर राइट नाउ, अगर मैं अभी की बात करूं एंड टेल के यार ये जरूरी है. I had to build a conversation on Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, and all the mediums to actually tell कि हाँ भाई फूड पैंडा यूज करने के लिए you need to actually worry about contactless delivery. अगर वो नहीं कर रहा, you can question them. So all of these things basically went onto digital mediums and digital campaigns. So that is how digital actually played a role to inform the masses. Right. ये तो आपने बताया for brands that might be essential, so to speak, during this time. You might also be working with brands जो essential items जो नहीं बेच रहे होते या जिनका कोई essential services उस तरह से नहीं है. Could you give examples, or without even naming if you prefer that way, कि कैसे उस तरह के brand की messaging change हुई during COVID, after they realized that people might not be responding to their messaging in the same way, or जैसे आपने कहा कि people are on edge because of the pandemic and they might not be as receptive to traditional नाच गाना. या सो देखो बहुत सारे ब्रांड्स है जहाँ पे ऑब्वियसली वो एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं था, बट दे स्टिल वांटेड टू सर्वाइव, दे स्टिल वांटेड टू सेल. अब at the same time I cannot ask a clothing brand to ask people to actually come to a mall and purchase their thing because that's on a sale. So this is unethical, and this is unethical thing to even do that. So we actually created, let's suppose अगर X brand है और मेरे पास उसका survival is important, so I put that brand in a collaboration with an essential brand. Okay, let's suppose मैं एक आपका essential product है and I'm sending out to the people to know what this product is. Let's just do a collaboration with another brand. So survival is important for everyone. अगर ये भी नहीं किया, let's suppose collaboration is something which is minimal to certain brands के अच्छा यहाँ हो सकती है, अगर वो भी नहीं किया, so we kept the conversation alive. आपने डॉक्टर्स बेस पे बात कर ली कि यार अच्छा सही है, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड वी आर आपका द काइंड ऑफ ब्रांड, वी डू नॉट वांट यू टू स्टेप आउट, वी डू नॉट वांट यू टू एक्चुअली कम आउट एंड बी लाइक कि अच्छा नहीं ये ज्यादा काम करना इंपॉर्टेंट है, खाना पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कपड़े खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मेकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than any other essential part. So even those brands kept on talking about the importance of different essential things. आपको चीज बेचना जरूरी नहीं थी, बट आपको टॉप ऑफ द माइंड अपने कंज्यूमर के रहना जरूरी था. यू हैव टू शो हाउ एथिकल यू आर इन द पीरियड, ताकि द डे this pandemic gets over, the day the corona lockdown gets over, even if I say that corona is still there but the lockdown is over, that's the time people would actually go and purchase those brands. Okay, they are responsible brands. Right. So this is how the communication kept on going and still happening. Right. So now we've talked about brands और उनकी messaging वगैरह कैसे change हुई, या उनके brands का the whole idea behind their marketing कैसे change हुआ. Now we're going to talk about another kind of change that you might have experienced on a personal level. तो आपकी life, like work related situation, how did the pandemic affect that? I think I went 100% shift, right to left, east to west, north to south हो गया मेरे साथ जिंदगी में.
आ, सुबह उठ के ऑफिस जाना, ऑफिस जाके काम करना, 5:30 बजे लैपटॉप बंद करना, घर आ जाना, वर्क कॉल्स का 1-1.5 घंटे तक चलते रहना, एंड देन यू हैव अ डिफरेंट लाइफ. You pack your things, you have a different life. But since Corona, obviously pros and cons हर चीज के हैं. I love not going to office because of the traffic. I love not going to office because of the meetings which I don't like to attend. So, but at the same time, we are working 24/7. We are on call all the time. We are discussing things all the time. We have to अच्छा, beside that, अगर normal days होते हैं तो we know how usually we can foresee 6 months के बाद आपका इंटरनेट पे क्या चीज चल रही होगी, 6 मंथ बाद हमें क्या कहते हैं, क्या कैंपेन कैसे करनी है, हमें ऑन ग्राउंड इवेंट्स की प्लानिंग करनी होती थी, तो वो एक फन एलिमेंट, यू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव फन, यू देयर, तो एक चल रहा था. बट नाउ आई हैव टू लर्न अबाउट सोशल मीडिया एवरी 24 आवर्स, इवन लेस देन दैट, बिकॉज वी डोंट नो हाउ दे रिएक्ट. वी डोंट नो कि अभी 12 घंटे बाद अगर किसी ने न्यूज ब्रेक कर दी है कोरोना का जो इफेक्ट था वो 70% डाउन हो गया है, और आपका एवरीथिंग विल गो हैप्पी हैप्पी ऑल ओवर द इंटरनेट. एंड उसी वक्त अगर किसी ने ये बात बोल दी कि यार अच्छा XYZ मसला आ गया है, और उसकी वजह से कोरोना का वापस आ गया, और हमारा क्या कहते हैं XYZ कंट्री के साथ मसला आ गया है, हमारे जहाज ही हो गए, हमारे पायलट tada, you cannot have your campaign go with that. You need to change your communication. I'll give you an example for that. रमजान में जब आपका अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब हुआ था इसका, PIA की एक फ्लाइट का, सो वी वर, इट वाज ईद. ऑब्वियसली हमारी कैंपेन्स टारगेटेड थी आपका ऑल एंटरटेनमेंट बेस्ड, हैप्पी गो लकी, ग्लूमी, फुल आपकी जो है ना चुलबुल किस्म की हमारी कैंपेन्स रेडी थी. वी वर इवन इन अ फेस कि हम लोग उसको स्टार्ट करें और ईद पे खत्म करें, और मतलब इस तरह करके हमारी कैंपेन स्टार्ट हो. बट व्हाट हैपेंड, दिस अनफॉर्चुनेट न्यूज केम इन एंड वी स्टॉप्ड एवरीथिंग. वी स्टॉप लिटरली एवरीथिंग. आप मतलब सुबह एग्जीक्यूशन पे जा चुके हैं, आपकी कैंपेन हाफ वे स्टार्ट हो चुकी है, एंड देन यू फिगर्ड आउट कि समथिंग रॉन्ग हैपेंड ऑन द इंटरनेट, चेंज. बट दिस इज समथिंग जो कि कोरोना के अलग, मतलब इवन इफ नॉट द पेंडेमिक सिचुएशन होता तो हम करते, बट इन पेंडेमिक सिचुएशंस हमारे पास मजीद ऐसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं. आई वुड से लैक ऑफ मेडिकल सपोर्ट, हमारे इंस्टीट्यूट्स का हमें इशू होता है कि कभी भी कोई न्यूज ब्रेक कर जाती है, तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या सेंटिमेंट चल रहा है रिलेटेड टू दैट. अदरवाइज अगर मैं इस, आपका देखिए सिल्वर लाइनिंग वाली बात है, अगर ऐसे किसी टाइम पे मैं अपने ब्रांड की वही कम्युनिकेशन रख के इंडोर्स कर जाऊंगा, सो आई विल बी एक्चुअली एंटरिंग इनटू अनदर क्राइसिस. तो एक क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, और मैं जो आपका इफेक्टिव काम करने जा रहा था, जिस बात पे मुझे ब्रांड शायद अप्रिशिएट कर रहा था, वो मुझे रात के 3 बजे फोन करके बोल रहे थे तो ये तुमने किया क्या, how the backlash, how could you not see this backlash. तो वो सिचुएशन हो रही होती, तो हमें 24 घंटे इस वक्त ये अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेट पे क्या चल रहा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है, किस किस्म की न्यूज जो है वो ब्रेक हो रही है, कहाँ डोनेशन ड्राइव्स की बात हो रही है, कहाँ पे आपका हैप्पी न्यूज चल रही है, कहाँ पे आपका सैड न्यूज चल रही है, कौन सा मीडियम कैसे रिएक्ट कर रहा है. इवन लेट्स ट्विटर रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, इंस्टा रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे, Facebook reacts in a different way. You have no idea. Let's suppose if there is a crisis on Facebook, you still find कि Insta पे दुनिया बिल्कुल सही चल रही है. And at the same time, आपको लगेगा Twitter पे तो there is a political war. So you can actually find 3 different mediums in 3 different situations at the same time. So you need to actually figure out. तो उसकी वजह से काम बढ़ गया, डबल हो गया. 24 आवर्स हमारा क्या कहते हैं, अब लेट्स से नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स, बट कॉन्स्टेंटली लेट नाइट्स कॉल्स एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग. बट आई बिलीव सही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर लर्निंग राइट नाउ, इंक्लूडिंग आवर डिजिटल लर्निंग्स एज वेल, बिकॉज सबने इस चीज को अडेप्ट किया, टाइम लगा सबको. वी आर स्टिल इन द फेज ऑफ लर्निंग. ब्रांड्स के साथ काम करने में इस वक्त बहुत ज्यादा आपको पता चल रहा है चीजों का, कहीं पे इंटरनेशनल मार्केट जो है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांड की टीम्स है, जब हम कॉल्स भी उनके साथ होते हैं लेट नाइट तो या अर्ली मॉर्निंग, सो वी गेट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक इट्स इफ वी सी इट एज अ लर्निंग प्रोसीजर, we are going to like it. But if we see it as a thing कि impose कर दिया हमारे ऊपर, now is the time that we are being uh, exhausted for everything, then it is an issue. And I think it's not something in our hands. We are exhausted sitting at home, we are exhausted logged at home, we are exhausted from not meeting in person people. But
I think it's a time we need to understand how important is that. So jitna possible ho utna करें, jitna possible नहीं है, because you know I went to office today. My office is closed. I went to office today for certain things, to meet certain people which are important for me. करें with precautions, आप करें. So you know you cannot just stick to one single routine कि हाँ सही घर पे लॉग होके बैठ जाओ, and you know Zoom calls, meetings and all of that, campaigns directly हो रही हैं, सब हो रहा है, but at the same time दोनों चीजें important है. तो इफेक्ट तो अच्छा खासा आया है, नो डाउट. और ये 24 घंटे काम करने वाली चीज ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं है. Yeah, आपने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात की that I hadn't thought of before, कि किस तरह आपको because इंटरनेट पे आप चीज़ें बहुत rapidly evolve करी हैं, much more than before. ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना जो फॉर एग्जांपल कंटेंट कैलेंडर या कैंपेन कैलेंडर बनाते थे वो आप essentially अब बना ही नहीं सकते बिकॉज यू डोंट नो कि नेक्स्ट आवर You have no idea. नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो रहा है. Exactly, we have no idea. So you know what, before this whole corona thing, I used to do, for past 2 years I've been doing 2 fashion shows in Karachi, one in Lahore. Then I've been doing lifestyle awards के अंदर, मतलब हमारी टीम पूरी काम कर रही होती है. थिंग इज के यू एक्चुअली फोर्सी कि अच्छा सही है, मुझे मार्च में काम करना है, मुझे मार्च में शो ऑर्गेनाइज करना है, 2 महीने पहले से काम स्टार्ट कर देते हैं. देन यू नो मुझे आपका विंटर का सेशन करना है, तो उसमें 2 महीने पहले से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है. वी आर एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैट. एक हमारा ये रूटीन चल रहा था. ब्रांड आता था, ब्रांड मुझे कहता था कि यार मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो मेरा क्या कहते हैं ये सीन है, एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. अभी मुझे ब्रांड कहता है कि यार कल वो फॉर इंस्टेंस आपका कोरोना की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, अगर हम सोचें कि मास्क की शॉर्टेज हो गई है पूरे पाकिस्तान में, एंड वी हैव द कोटा एंड वी हैव द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस दैट. तो एक कोई भी कपड़े बनाने वाली, कोई भी आपका फैशन सेंट्रिक ब्रांड की अगर हम बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, वो आके बोले कि यार मुझे कल इसके ऊपर कैंपेन करनी है, मास्क की कैंपेन करनी है. मैं पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा, मैं पूरी कैंपेन बिल्ड करूंगा, कहाँ कम्युनिकेशन जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी चाहिए, कहाँ होना चाहिए. द पॉइंट, द सेकंड आई एम अबाउट टू लेट्स से लॉन्च दैट कैंपेन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ जाएगी कि मास्क अवेलेबल हो गए हैं, वी हैव इम्पोर्टेड दैट फ्रॉम, मास्क के कल आ जाएंगे और ये हो जाएगा. कहाँ गई मेरी सारी मेहनत, Exactly. कहाँ गई ब्रांड की मेहनत. सो यू नो यू हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट सेकंड में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है. सो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट राइट नाउ. एग्जैक्टली यही मैं भी सोचा था कि जिस तरह मार्च में पहले अनाउंसमेंट हुई, अप्रैल में कि जब लॉकडाउन हम खोल रहे थे कि थिंग्स आर गोइंग टू बी मच इजियर नाउ, बट देन ईद हैपेंड और उसके बाद केसेस एकदम सर्ज हो गए. तो एक्सपेक्टेशन अभी ये थी कि जी मई जून जुलाई अगस्त सब कुछ केसेस ज्यादा होते जाएंगे इंक्रीजिंगली, बट नाउ वी आर सीइंग केसेस फिर नीचे जा रहे हैं. सो Yeah. वही अब बंदा प्लान लाइक ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्लान करना शुरू करो कि यार ठीक है केसेस आर गोइंग डाउन, तो लेट्स प्लान से फॉर एग्जांपल फॉर नेक्स्ट मंथ और 2 months डाउन द लाइन, बट यू नेवर नो कि केसेस कैन राइज बैक अप अगेन. अभी ये तो वही वाली बात है कि वी वर प्लानिंग लेट्स से कि 20 डेज बाद ऑन ग्राउंड हो जाएगा, तो हम एक रेस्टोरेंट लॉन्च की बात कर रहे हैं. पता चलता है कि 20 डेज बाद तो नहीं है, तो 30 डेज मजीद लॉकडाउन हो गया. तो हमें पता चलता है कि यार 30 डेज मजीद लॉकडाउन की बात हो गई. एंड देन वी सी इस तरह होते 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 आज 5वां महीना चल रहा है, एंड वी स्टिल कंफ्यूज. बट नाउ at this stage of period we understood that this is not leaving us anytime soon. So let's just keep our mind focused towards communicating through right channels कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है. स्टॉप थिंकिंग कि हाँ यार ये नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा, या लेट्स से ये 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा. थिंक इन अ वे कि ये यही है, इसने कहीं नहीं जाना, आपका मीडियम यही है, यू हैव योर ऑडियंस हियर, लेट्स build some kind of communication here rather just be like अच्छा यार 3 महीने बाद की हम ये प्रैक्टिस करेंगे, ये ऑन ग्राउंड हो जाएगा. नहीं होगा, वी ऑल नो नहीं होगा. राइट. सो कम्युनिकेशन से एक जो इंटरेस्टिंग एक सेगवे हमारे लिए नेक्स्ट बनता है वो ये है कि यू आर वर्किंग ऑन द ब्रांड साइड करंटली एंड यू अंडरस्टैंड कि ब्रांड्स को क्या कम्युनिकेशन वगैरह बेहतर करने की जरूरत है विद देयर ऑडियंस एंड एवरीथिंग. But you also have an experience on the publication side and on the platform side, so to speak, because you have studied filmmaking, you have worked as a journalist. So could you tell us a little bit about that experience of yours? How has that helped you in understanding, brands much better, or working with brands in much better ways? So I'll say when I was so
initially when I was doing my degree, I did not think कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या करने जा रहा हूँ. My degree in filmmaking, my whole purpose was to learn a skill, because advertising, marketing, and these all these things comes with the practice, but filmmaking is something where you can actually learn a skill, how to make a film, how to produce a thing, and how to use a camera and everything. And I'm thankful to my professor Faraz Iqbal, who taught me how to use a camera, how to make film, and lights and everything. So my degree ka meri degree ka purpose wo tha, but at the other end, degree gives you basically the overall structure of कि हाँ आपका एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एक्चुअली बेस सिखा रही होती है हर चीज की. योर कोर बेसिकली इज डन थ्रू योर एजुकेशन, बट व्हेन यू कम इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, दैट एजुकेशन, अगर आपकी कोर स्ट्रांग है, उस एजुकेशन की बेसिस के ऊपर आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. आप एक मेडिसिन का बंदा जो है, मेडिसिन पढ़ने के बाद वो मार्केटियर आराम से बन सकता है. आपकी बेसिक कोर जो है वो स्ट्रांग है, देन यू हैव टू बिल्ड प्रोफेशनल लर्निंग. आपका एक्सपीरियंस, आपका जितना भी बिल्ड ऑन है, वो आपका आपका कर करके आपने सीखने वाली बात है. सो व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून. आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज अ सब एडिटर. फिर वहीं पे क्या कहते हैं आपका डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन का भी वहां पे मैंने देखा, क्रिएटिव के अंदर भी देखा मैंने, अपनी सीरीज भी लॉन्च की वहां पे. आ, मुझे एक चीज समझ आती है कि मेरी भी गलती है, और मैं मतलब आगे भी जो देखता हूँ कि इस पार्ट ऑफ द साइट जो है आपका प्रोडक्ट पब्लिकेशन वाली एंड वाली साइट पे हमारा थोड़ा सा होता है कि ओके, सो वी हैव द प्लेटफॉर्म, वी आर द वंस, हम किंग हैं, बाकी सब पॉन्स हैं. ये कोई जर्नलिस्ट मुझे कह ले कि उसके दिमाग में नहीं है, मैं कभी भी नहीं मानूंगा. या कोई पब्लिकेशन वाला एडिटर मुझे कह ले कि उसके माइंड में मेंटेलिटी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू. सो सिटिंग, आपका क्या कहते हैं, इन पब्लिकेशन, योर माइंड इज बेसिकली हेयर कि okay, so I am the king, I have a platform, I can write everything, I can write anything, brands will come to me, everyone will come to me, even artists will come to me, and they will ask me. So उस टाइम पे आपका ये होता है. Then I went from आपका क्या कहते हैं publication to brand particularly. मतलब मैं I was working directly for a brand, I was working for a corporate firm. मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि सही है, ब्रांड जो होता है ब्रांड किंग होता है, क्योंकि ब्रांड के पास कंटेंट है, ब्रांड की वैल्यू है, पब्लिकेशन क्या होती है. सो आपका माइंडसेट वहां से एग्जैक्टली, मनी इज रोलिंग फ्रॉम द ब्रांड साइड. पब्लिकेशन जो है वो चलता ही ऐड के ऊपर है, ऐड देना ही मैं दूंगा तो जो भी होगा. सो पब्लिकेशन से मैंने क्या सीखा, पब्लिकेशन किंग होती है, पब्लिकेशन के पास प्लेटफॉर्म है. मैं ब्रांड के पास गया, मैंने ब्रांड से क्या सीखा कि ब्रांड के पास पैसा है, ब्रांड अपने आप को किंग समझता है. यहाँ से मैं गया एजेंसी के पास. आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ ब्रांड एंड पब्लिकेशन, मैं चला गया आपका टॉकिंग पॉइंट एजेंसी के पास. नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स. तो मुझे समझ ये आई कि इस ब्रांड के पास जो पैसा है और इस पब्लिकेशन के पास जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को मिलाने के लिए कोई भी एजेंसी का होना जरूरी है. बिकॉज इसका माइंड यहाँ है और तो इसका भी माइंड यहाँ है. इन दोनों को एक सेम पेज पे ला के यूटिलाइज कराना इज बेसिकली आवर जॉब. बी इट अ मीडिया बाइंग एजेंसी, बी इट आपका पब्लिक रिलेशन एजेंसी और डिजिटल रिलेशन एजेंसी. सो मेजर जो ब्रिज है वो तो हम लोग हैं. सो हम भी ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली वी आर द किंग. हम हैं जिनको सब कुछ पता है, आपका भी और आपका भी. सो मतलब हमसे बात करो. सो वी आर द वन जो बेसिकली आपको दोनों को मिला रहे हैं. सो experience from publication, experience from the brand, and then coming to an agency and working with multiple brands. I work with the corporate brands, I work even for media advocacy, I work for educational brands. So or with every kind of publication. तो मुझे ये एहसास हुआ कि स्किल सेट आपके पास होना चाहिए, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो, एंड देन यू आर रेडी कि अच्छा सही है, मैं किस तरह इन दो चीजों को मर्ज करके एक नई चीज डेवलप कर सकता हूँ. सो आई बिलीव मैंने जितनी भी लर्निंग ली है बाकी सारी जगहों से, जितनी भी जगहों पे काम किया है, इवन एट अर्ली डेज व्हेन आई वाज एट FM 91, वहां से भी मैंने सिर्फ यही चीजें सीखी हैं कि आपका प्लेटफॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है और लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, लोग कैसे काम करते हैं, प्लेटफॉर्म कैसे चलता है. सीख के हर जगह से निकलो, एंड देन यू विल बी रेडी टू एक्चुअली मर्ज दोस थिंग्स. Right. I actually disagree when you said कि brand समझता है कि वो king है and publication समझती है वो king है, because I feel like the audience is king. और वो चाहे वो जिस brand के साथ support कर रही है या जिस publication को support कर रही है, whenever there is audience, whoever has the audience is essentially the one who feels it. सरमद, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस बात पे. हमें पता है हमारी ऑडियंस बहुत चालाक है.
अगर That's हमारी ऑडियंस को लगता है ना कि मैंगोबाज जो है वो मजे का काम नहीं कर रहा, दे विल स्विच. absolutely. अगर उनको लगता है कि ब्रांड ने हमें एक चीज बताई है और हमने जब जाके वो खरीदी है और वो डब्बा निकला अंदर से, दे विल स्विच. सो Exactly. ऑडियंस इज समथिंग, दे वो तो मतलब दे आर नॉट लॉयल. ऑडियंस इज नॉट लॉयल. ऑडियंस की लॉयल्टी जो है ना वो आपके कंटेंट के साथ है. ऑडियंस की Exactly. लॉयल्टी आपकी प्रोडक्ट के साथ है. तो वो मुझे लगता है कि दे कैन गो राइट एंड लेफ्ट. सो Exactly. जो चीज रहती है वो प्लेटफॉर्म और ब्रांड का पैसा है बेसिकली एट द एंड ऑफ द. और आई विल से कि इन इन द टर्म जहां मैं बैठा हूँ एज एन एजेंसी, इन ए टर्म कि मैं ब्रांड से भी आया हूँ और पब्लिकेशन से भी आया, आई बिलीव इट इज ऑल द मैटर ऑफ मनी. बट बट एट द पब्लिकेशन एंड आपका न्यूज आइटम मैटर्स अलॉट. पैसे अपनी जगह पे हैं बट न्यूज आइटम मैटर्स अलॉट. अगर न्यूज के अंदर जान नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू रन इट. अगर न्यूज के अंदर जान नहीं है, so there is no point to even run it, so your audience is not there to read it, so there is no point to even do it. So न्यूज आइटम होना बड़ा जरूरी है, न्यूज वर्दी होना जरूरी है, न्यूज एथिकल होना बड़ा जरूरी है. अगर कोई भी जर्नलिस्ट होगा किसी भी पब्लिकेशन के अंदर, और उसके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि भाई न्यूज का वेटेज क्या है, एथिकल है नहीं है. तो ये चीजें उसके लिए बेटर करना बहुत जरूरी है. ब्रांड को ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूँ तो ब्रांड भी अब बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह कम्युनिकेशन डेवलप करनी चाहिए, क्या चीज जो है वो गलत हो सकती है. ब्रांड डरता भी है. तो आपको उन लाइन पे along those lines you have to work. So I believe हर जगह से सीखे and you will be able to bring new things on the table. Absolutely, I agree. I agree with that. Um, okay, so before we wrap up, I wanted to ask some personal questions of you. Firstly, okay, what's the first thing rather, that you will do once this social distancing, the pandemic, or quarantine वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो पहली क्या चीज़ है जो आप सबसे पहले करेंगे? यार ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा, दिस इज लाइक वन ऑफ द रेगुलर थिंग. आई कॉल एवरीवन, गो टू चाय का होटल, सिट विद एवरीवन ऑल नाइट, डू ऑल द गप्पे एंड स्पेंड माय टाइम. दिस इज वन एक्टिविटी आई यूज्ड टू डू रेगुलर. देखो हमारा जो मेरा जो प्रोफेशन है ना, विच इज मतलब कोर उसका जो है ना वो बेस ही इस पे करता है. मैं लोगों से मिलूं, सोशलाइज करूं, लोगों के साथ मेरे अच्छे रिलेशन हो, दो हो, फ्रेंडशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो. दैट्स हाउ आई बिल्ड माई लाइफ बेसिकली. एंड I'm literally stuck in a box right now. I कॉल्स पे वो काम नहीं हो सकता where you can actually sit someone, उसको आप दो बातें सुनाए, वो उसकी दो बातें सुने, and then you can actually build a relation. So I am really missing that. As soon as this gets over, I'm gonna have a chai session with all the people I know and spend my whole day. Right. And what's one thing that you, I mean, essentially you've mentioned that this is what you miss probably, but my next question was, what's one thing you miss about your life before the pandemic? I guess roam around easily because right now when I step out of my house, I have this thing in my mind कि shit, मैंने इस रेलिंग को हाथ लगा दिया है, अब मुझे हाथ सैनिटाइज करना है. अब मैंने इसको हाथ लगा दिया, मुझे हाथ सैनिटाइज करना है. So back of the mind, it is kind of a pressure, constant pressure which is keeping कि अच्छा यार अब ये कर दिया, अब ये गलत कर दिया, अब ये कर दिया, मास्क लगाया, बस this is something I want to get over. It's a trauma basically. So this is something I want to get over कि अच्छा सही है, even if things are not 100% back, एक ही चीज दिमाग से हट जाए कि यार अच्छा सही है. अगर मुझे कोई आज ये बोल दे ना कोरोना ट्रांसफरेबल नहीं है बट किसी एक्स वाई जी चीज से सिर्फ हो सकता है, मतलब किसी मच्छर के, लेट्स सपोज डेंगू, अगर मैं कहूँ कि हाँ मच्छर के काटने से मैं मच्छरों से बच जाऊंगा, एटलीस्ट मेरे दिमाग में ये चीज खत्म हो जाए कि मैं दरवाजे का नॉब मैंने टच कर लिया है, ओ शिट यार, मैंने मास्क थोड़ा सा नीचे कर लिया, ओ माय गॉड. सो ये चीज चली जाए, दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग मतलब a lot of frustration for everyone. Yeah, absolutely. ये वही द कॉन्सेप्ट की हर जगह है, उससे इसीलिए तो इतना पैनिक हुआ है पूरी दुनिया में. मसला है कि दिखता भी नहीं है. एग्जैक्टली. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, आपने मेंशन किया कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से और या ऑनलाइन काम वगैरह करने की वजह से यू आर वर्किंग 24/7. सो आर Yeah. देयर एनी हैक्स दैट यू हैव come up with to maintain a work life balance or some semblance of work life balance जो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ? यार आई बिलीव वर्क लाइफ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं एजेंसी बेस की बात करूँ ना, कि एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनके पहले भी वर्क लाइफ बैलेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा होता नहीं है.
Same goes for the publication wala people. But I believe recently I put up a picture with my bhanja on my lap while I was working on the laptop. So I guess चीजें चलती रहेंगी, आपको दोनों तरफ टाइम देना है, there is no hack in it. Be respectful towards everyone, be humble to everything. आपकी मीटिंग है, ऑब्वियसली आपके घर वाले आपसे बात करने आ रहे हैं, आपको एक होता है, you might react in anger कि अच्छा यार प्लीज let me have a meeting first, but obviously at the same time you have to go and get a dhania for your mother. You can't do anything. It needs to be done. So these are the important things. So I believe balance नाम की कोई चीज नहीं होती. You do whatever is actually coming towards you. Meeting आ रही है, meeting करो. You have to do your plan. Fix the time to do your plan. You know when you have to submit it. You know your deadlines. If there is something urgent, you can always excuse your family. You can always excuse your office people. Okay, so there is something I need to deal with first. So prioritize your things. That's all. You will be able to do everything. Right. वंडरफुल, थैंक यू सो मच. आपने ये इन अच्छी टिप्स के साथ ही हम एंड भी करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को. थैंक यू हारिस फॉर गिविंग अस द टाइम एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड शेयरिंग इनसाइट्स दैट यू हैव with our audience. Have a lovely weekend and stay safe. Thank you, Sarmad. Thank you, Sarmad. Thank you for having me and anyone who actually gave my reference to be there. बहुत मजा आया. All those questions, I actually wanted to tell people कि हाँ ये मसले हैं, कोई सुन नहीं रहा है. I guess this is the right platform. I gave all the insights I knew, and I believe कि हो सकता है मुझसे बेहतर जानने वाले लोग भी हों और मुझसे बेहतर लोगों को भी आइडिया, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग भी होंगे, डाइवर्स एक्सपीरियंस के साथ भी होंगे. So I try to give everything from my experience, and I hope people would actually understand and learn from it. मेरा एक चीज बस ये है कि नए आने वाले जितने भी हैं, काम करने वाले किसी भी फील्ड के अंदर, भले वो जर्नलिस्ट हो, भले वो पब्लिक रिलेशन हो या ब्रांड मैनेजर्स, मार्केटर्स, एनीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. मतलब एक चीज मेरे पास जब आती है ना, कॉल आती है कि यार वो मेरी सीवी है और इस तरह करके, आई नो समवन जिसको काम करना है, स्टफ लाइक दैट. Start from somewhere. मतलब there is no set particular mark that you want to achieve and you will instantly achieve it. तो मतलब कहीं कहीं से काम करना start करो. This is something which frustrates me a lot even in the pandemic time. लोगों के पास job नहीं है. It's a very uncertain market at the moment right now, but they still have this thing कि यार मुझे जो काम करना है ना, मुझे तो ये particularly let's say multinational के साथ ही करना है. और मेरा जो अच्छा सैलरी ब्रैकेट की अगर हम बात करें, लोगों से बात करते हैं यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सैलरी, तो वो ये नहीं देखते कि मार्केट कंपेटिटिव सैलरी क्या है. वो ये देखते हैं कि अच्छा यार मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर 1 लाख रुपए का है ना, तो मुझे आप 1,10,000 दे दें. एंड यू गो लाइक यार ब्रो इस पोजीशन के लिए तो मतलब लेट्स से हाफ द सैलरी, मतलब एंड दे गो लाइक नहीं देखें मेरा होगा नहीं ना मुझे. एंड देन they'll go in a circle, they'll go on a social media and rant about it कि यार jobs नहीं है. So अपनी approach सही रखें. Start from somewhere. There is always a skill and there is always something to learn from every corner. तो मतलब भले वो कुछ भी हो, अगर आपकी फील्ड से रिलेट कर रहा है, अगर आपके और अपनी फील्ड लार्ज, मतलब योर होराइजन शुड बी लार्ज. आप डिजिटल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप कन्वेंशनल से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू विल एंड अप एट डिजिटल. अगर आप ब्रांड से स्टार्ट कर रहे हैं तो मे बी आप पब्लिकेशन पे एंड अप कर लो, मे बी यू बिकम अ वीपी मार्केटिंग समवेयर. सो मतलब स्टार्ट स्मॉल, start learning and utilize that to bring new things. That's all. Right. Thank you so much, Haris. And hopefully our audience can learn from some of these very interesting tidbits and Hopefully. insights. Okay, have a nice weekend and goodbye. You too. Goodbye. Thank you.